डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे और एक टॉपिक पे जो एमएड में है उसका है और प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। तो किस तरह से प्राइवेटाइजेशन जो है गवर्नमेंट के बगैर भी जो काम करते हैं इस एजुकेशन के लिए उन पे किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ और इसका रोल क्या है एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन। तो ये बात करेंगे हम इसमें थोड़ा बहुत हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंसेप्ट कैरेक्टर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के और काजेज़ ऑफ क्यों ये हुआ है, फैक्टर्स रिस्पॉन्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो है उसका एजुकेशन है, ये भी हम बात करेंगे आज। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हमारी जो वीडियोज़ है, लेक्चर्स हैं, उनको शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल है डॉक्टर रईस हमारे डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि बाकी बच्चों को फ़ायदा हो जाए। एक हमारा होता है जहाँ हम इकनॉमिक की बात करते हैं या जनरल में भी एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है ये आपको पहले समझना है। पब्लिक सेक्टर में होता है द सेक्शन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वेयर इज द सेंट्रल सिटी लोकल इज नोन एज द पब्लिक सेक्टर। बेसिक ऑब्जेक्टिव टू सर्व द सिटीजन ऑफ द कंट्री, रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक रेवेन्यू लाइक टैक्स, ड्यूटी, पेनल्टीज एक्सेट्रा, बेनिफिट्स फॉर ऑफ वर्किंग और जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंस एंड पर्सिक्यूट्स area under the public sector as police, army, mining, health, manufacturing, electricity, education, transport, telecommunication, agriculture, banking and insurance. So these are some important come under the subheading of this public sector. So these are the essential points. ये आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने इसमें कॉपी पे, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आता है जैसे द सेक्शन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विच इज ऑनर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, रेजेस मनी फ्रॉम द इशूइंग, शेयरिंग एंड इसमें होते हैं डिबेंचर्स और टेकिंग लोन्स, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एज अ गुड सैलरी पैकेज, कॉम्पिटिटिव इसमें आता है आपका एनवायरमेंट इंसेंटिव्स। एरियाज अंडर द प्राइवेट सेक्टर आर द फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चर, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये भी इसमें आता है। आपका डेयर स्टूडेंट्स ये आते हैं आपके, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। इंट्रोडक्शन में प्राइवेटाइजेशन ऑफ द, अब देखेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट न्यू, इट एग्जिस्ट्स इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ द सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स, इसको बोलते हैं डून स्कूल्स, मायो कॉलेज एंड क्रिश्चियंस, मिशनरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ took initiatives to establish the state-owned and government-aided schools after 1990s. Interlinked process of globalization and liberalization have tremendously affected the education process in India. These have encouraged many forms of privatization and added schools through the process, like raising the private tuition, subcontracting, the publication of textbooks to promote private agencies, selection and appointment of teachers by their own management, so of own terms and conditions. So this यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। इसमें प्राइवेटाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी डिफिनेशन है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। और एक जैसे ये है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर में द टर्निंग द, उसमें है turning the operation of public schools over to private companies is controversial idea based on the less controversial nation that what makes important public schools so the hard is that they are bounded down in the bureaucratic try. Private efforts to run public schools land should be the great characteristic lotting a lot of steam once they get down to the attitude work for their running schools, but despite the private contradiction problems emergence of education industry continues. So ये इसमें लिख सकते हो आप, ये भी ऐड कर सकते हो। ये वाला स्लाइड जो है ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी परसेंटेज ये ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ये हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इंडिविजुअल्स का और कंपनीज ओनरशिप है इसमें, नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट फील्ड्स है एंड गुड ऑल्टरनेटिव्स। उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें अब कॉजेज़ है, इसको रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लॉक्ड अप इन नॉन स्ट्रेटेजिक PSCs फॉर इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इन एरियाज दैट आर मच हायर ऑन द सोशल प्रायोरिटी सच एज द बेसिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, प्राइमरी एजुकेशन, सोशल एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये उसमें आप ऐड कर सकते हो। उसमें है स्टेमिंग फर्दर आउटफ्लो ऑफ दीज सिक्योर पब्लिक रिसोर्सेज, सस्टेनिंग द अनअवेलेबल, उसमें आप लिख सकते हो unavailable non-strategies PSCs, reducing the public debit that is threatening to assume unmanageable proportions. तो ये है cause of wastage में आप ये लिखे हैं तो आप इसको लिख सकते हो।
और है इसमें ट्रांसफरिंग द कमर्शियल रिस्क्स टू विच द टैक्स पेयर्स मनी locked up in the public sector is exposed to the private sector wherever the private sector is willing and available to step. Realizing other tangible and intangible resources such as the large employment currently locked in the managing the PSCs and your time and energy for the redeployment in high private social sector which are short of the such resources. तो ये भी आप उसमें लिख सकते हो. उसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे इसमें है डिसीजन फेवरिंग प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन नेशनल पॉलिसी कौन ये इम्पोर्टेंट है आपके फ्रॉम द जो आपके सिलेबस का पॉइंट जो है सिलेबस के पॉइंट व्यू से नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 उसने भी बोला है कि नहीं एजुकेशन को हमें प्राइवेटाइज करना है 8th 5-year प्लान जो है 1992 1997 इसका भी है यूजीसी जो 1995 इसने भी जोर दिया है वर्ल्ड बैंक जो है 1995 इसने भी दिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है 2002 इसमें तो यहाँ पर इनका अलाउ किया गया है जो फेवर करते हैं ये वाले कमीशन जजमेंट करते हैं प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन तो ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है. इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट मीन inability of the city is there. Poor access. 70% of the youth our age of youth have access to the higher education, which needs to be raised at least 10%. Non-placement. 25 to 30% of the students who pass the class 12 do not find placements in higher education. Low priority in the first 5-year plan. Allocation of education was 7.6. It came down to 1.3% to 18th plan. So ये important point है ये भी आप इसमें लिख सकते हो. उसमें है फैक्टर रेस्पॉन्स फॉर प्राइवेटाइजेशन नीड फॉर द कम्पिटिटिव एफिशिएंसी तो ये इंपॉर्टेंट है नीड फॉर द कम्पिटिटिव एफिशिएंसी इसमें मैं द मेन जस्टिफिकेशन फॉर प्राइवेटाइजेशन रेस्ट्स हेवीली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एफिशिएंसी टू प्रमोट अ मोर कम्पिटिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड इन इंसेप्शन इट इज बिलीव्ड दैट द प्राइवेट ओनरशिप जो है एंड कंट्रोल आर मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन एंड वर्क तो ये इंपॉर्टेंट है उसमें और है ग्रोथ इन पॉपुलेशन है इसमें इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 171 लार्ज नंबर ऑफ पीपल मोर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर नीडेड तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन क्योंकि एक तो है नीड फॉर द कम्पिटिटिव एफिशिएंसी हम चाहते हैं कि कम्पिटिटिव हो तो उसमें बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू हैव एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन. नंबर 2 ग्रोथ इन पॉपुलेशन क्योंकि जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये ज़रूरी प्राइवेटाइज करना था तो ज़रूरी उसमें एक पॉइंट है जैसे टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द हायर एजुकेशन बाय द यंग पीपल इन द कंट्री प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इज नीडेड ज़रूरी है. उसमें है फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट तो हायर एजुकेशन इन इंडिया इज द फाइनेंशियल स्ट्रेस द स्टेट गवर्नमेंट क्या है कैन नो लॉन्गर बियर द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पब्लिक एंटरप्राइज currently spending on the education in India is not more than 3.5% of the GDP. Very little is being spent on higher education. Therefore, there is a need to evolve policy through which private resources are mobilized. तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें. Cost for quality जो है private institutions do not require long procedures for procedures. तो यहाँ पर है cost for quality है quality के लिए अगर हमें करना है कि नहीं हमारे यहाँ quality education होना चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है तो आप इसको देख सकते हैं quality के लिए ज़रूरी है. उसमें है जैसे और एन इक्विपमेंट जो है एन इक्विपमेंट्स लाइक द क्या होता है इसको द इक्विपमेंट्स लाइक फर्नीचर है बिल्डिंग्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैबोरेटरीज एंड एकेडमिक स्टाफ हु कैन बी पेड एज पर द डिमांड देयर इज अ नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन रैपिड ग्रोथ ऑफ द स्कूल एजुकेशन क्योंकि अब जहाँ पर ज़्यादा है रोज ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कूल नेचुरली पुश द डिमांड ऑफ हायर एजुकेशन विच द 204 government is not able to provide. Therefore, the demand of the privatization of higher education is need of the hour. Fulfilling the need of the secular manpower. There is a very little initiatives from public sector due to the limited freedom. Private institutions are free to initiate the modern and advanced courses in order to यहाँ पर है fulfill the demand of such interest for this is needed. तो ये भी important point है तो इसमें dear students है बहुत सारे points है जो मैंने आपको बोला है. ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आप देख सकते हो कितना ग्रोथ है नंबर का स्टूडेंट का तो ज़रूरी हमें प्राइवेट करना है. अब है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स पीओ अच्छा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स हो सकते हैं इसमें रिसोर्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स उसमें और एक है यहाँ पर प्राइवेट वैरायटी एंड सिलेक्शन होगा और कमर्शलाइजेशन तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसमें है सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट तो इससे एक तो ये चीज़ें हो जाएगी इनसे प्राइवेटाइजेशन करने से. फिर है इरोजन इन द क्वालिटी सोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा ठीक हो जाएगा. फिर इनइक्वालिटी अर्निंग कैपेबिलिटी तो एजुकेशन इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे लोगों को. और इम्पॉर्टेंट है कॉस्टली एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन तो फिर है इसमें ये वाला है एडवांटेज ऑफ एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन क्यों ये ज़रूरी है ये वाला आपको स्लाइड याद रखना है.
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें तो हम एक तो इसका बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि इसमें हमने एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने से ही फायदा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन रिफॉर्म्स, इनोवेटिव्स इन टीचिंग एंड एजुकेशन, उसे बात है टेलर मेड सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ द वाइड चॉइस ऑफ द कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स टू competition, quality education and training, shaping the curriculum according to global, national and local needs, availability and better maintenance of the resources and transparency in all the procedures, utility of the human and physical resources in the proper way. So इसमें important point है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, initiatives in the education forms का innovatives in teaching and education में हो जाएगा, competition बढ़ जाएगा, quality education का अच्छा होगा, shaping the curriculum according to global and national and local values, availability of the better maintenance of resources, उसमें बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन करने से इसमें एडवांसमेंट हो जाएगा, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलिटी अच्छी तरह से हो जाएगा, और नए नए इन्वेंशन इसमें इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स आएंगे प्राइवेटाइजेशन करने से। तो इसमें है जैसे डिसएडवांटेज ऑफ द एजुकेशन, इसमें है विल बैडली अफेक्ट द पुअर अंडर, इसमें क्योंकि है अंडरमाइन द इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड ओपिनियंस, डू नॉट एडवांस इश्यूज ऑफ द क्वालिटी एंड फेयरनेस, एक्सप्लोइटिव फीस विल बी डिप्राइव्ड मेनी ऑफ द एनेबलिंग एजुकेशन, एप्रीहेंशन अबाउट द जॉब सिक्योरिटी एंड रिट्रेंचमेंट ऑफ द स्टाफ, कलेक्टिंग फंड्स मे बी मिसयूज्ड बाय द ओनर्स, बेनिफिट्स रिमेन अनप्रूव्ड। तो ये इसमें है कुछ डिसएडवांटेज। उसमें है फीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल जो है, टोटल फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेट इन स्कूल और competition between the schools, parents select school using market parameters, high school and some middle schools, democratic participation and plural education। तो इसमें ये चीज़ें हो सकता है। इसमें है थियर्स इसमें होते हैं, ये वाले आप देख सकते हो, ये जरूर एग्जाम में नहीं लिखने हैं तो मगर फिर भी आप देख सकते हो। प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, while India can boast having a third largest higher education system in the world, rarely that is, इसमें आप देख सकते हो, rarely that is facing a severe shortage of the skilled human resources. The reason for such a contrasting situation is the extremely low quality of the primary, secondary and college level education in India. A possible way out from this situation is privatization of the education system, which is predominantly public at the present. Privatization of education has the potential to improve the quality of education as well as reduce the cost. तो इसमें ये चीज़ें हो सकता है। अब है उसमें हम पहुंच गए, एक सेकंड, हाँ इसमें हम ये है, इसमें अब देखिए, नहीं इसको पहले हम ये पढ़ेंगे, द चैलेंजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, the challenge of introducing such a system will magnify. First, the government needs to make sure that the school exists in every locality. Left to the enterprises themselves, they may have high to open to उसमें आएगा schools in the high income locality where the students will be better compared to the income capability. So the policy makers must ensure the low income capabilities. इसमें है the second challenge is to ensure the quality. Although the private schools in the general and better than the public enterprises, but relying too much on them can also be costly. The quality of a private school is also vary significantly, while some of them are maybe, तो इसमें ये चीज़ें हो सकते हैं, आप देख सकते हो स्लाइड में, आप खुद अपने काम पे लिख सकते हो, ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। अब ये वाला स्लाइड है, इसमें ये वाला स्लाइड और एक है, वाई द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ फीलिंग टू द प्राइवेटाइजेशन, इसमें ये है हाउ प्राइवेटाइजेशन अफेक्ट्स एजुकेशन, ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंट 10 years the quality of education in government schools has degraded with drastic as a result bring the private schools due to the government policy of referring the quality as overacting. Private schools colleges are knowing getting into registration. This private schools at the big cities are good but the quality and small are very, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, आप देख सकते हो। ये वाले एजुकेशन सब यहाँ पर भी आप ये वाला स्लाइड आप खुद लिख सकते हो। पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, इसमें आप देख सकते हो। नीट रियली फोकसिंग ऑन एजुकेशन पार्ट्स, ये वाला आप स्लाइड के लिख सकते हो। बाइंग एजुकेशन, ये वाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें है ये वाइड गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच, ये इसको ख़त्म करना है। एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना है। इसमें है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यू टू द ऑनरशिप लेवल ऑफ क्वालिटी एंड किचन सेटअप बाय ग्रेट एक्सटेंट ऑन इज नॉट ट्रू विद द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हैज टू डाउट ऑफ इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स बट क्वालिटी इज यट टू बी एनहांस्ड। तो ये हमें ज़रूरी है, हमें इसको अपडेट करना है। उसमें है इनएफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स भी लाने हैं, इसमें जो बहुत ज़रूरी है हमें इम्प्रूवमेंट्स लानी है। फिर है कॉन्फाइंड स्टूडेंट्स है, उसमें है ये वाला स्लाइड भी आप लिख सकते हो। measuring to improve education, to improvise education. So finally we have to make our foundation very strong, that is from elementary education to higher education institution, learning institution. For this we can adopt certain measures like to pay proper wages to the teachers. There should be no Gujarat Swami, Shiksha Mitra and many more such as I say. Proper monitoring over the teaching learning practices. Teachers in government schools should really try to, हमें बहुत सारा काम मेहनत करनी है इनको लिए, तब जाकर ये हो जाएगा।
आएगा. फाइनली वी स्ट्रॉन्ग विल पावर टू ब्रिंग चेंजेस फ्रॉम द rudimentary level. तो ये हमें करना है उसमें. And one more is that privatization can help India to gain higher competitive advantages in education sector. There can be some main manipulation there, but managed by the poor rulers and regulation of the government. There are always pros and cons that can be overcome by the involvement of the government and private sector efficiently. तो ये इसमें है. तो thank you very much.